Hello dear students, today I am giving you some of the rules and regulations of our own game, that is Kabaddi. Go through it, keep learning and note it down. Let's see the rules of Kabaddi. मेरा नाम है विजय और मैं हूँ जया। क्या आप भी हमारे साथ कबड्डी खेलेंगे? तो आइए पहले देखते हैं कि इस रोचक खेल को खेलते कैसे हैं। आओ खेलें कबड्डी। कबड्डी दो टीम्स के बीच खेला जाता है। इस खेल में आपको नियमित समय में विरोधी टीम के साथ आक्रमण और बचाव के दांव खेलते हुए उनसे ज्यादा अंक हासिल करना है। हमला करने वाली टीम अपने एक रेडर खिलाड़ी को विरोधी टीम के हिस्से में भेजती है, जिसे सांस उखड़ने से पहले एक या ज्यादा खिलाड़ियों को छूकर अपने इलाके में नियमित समय में वापस आना होता है। बचाव करने वाली टीम का लक्ष्य यह है कि वो रेडर को उसकी सांस टूटने तक पकड़ कर रखे और उसके हाथ में नियमित समय तक वापस ना जाने दें। कबड्डी खेलने के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। खेल की शुरुआत टॉस से होती है। जो जीतता है उसे पहले रेड या कोर्ट चुनने का मौका मिलता है। जिस टीम ने पहले भाग में रेड नहीं की थी, वो टीम खेल का दूसरा भाग पहली रेड करके शुरू करती है। कबड्डी दो टीम्स के बीच खेला जाता है। हर टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से केवल 7 खिलाड़ी ही एक समय पर मैदान में खेलने आते हैं और बाकी 5 बेंच पर रिजर्व में रहते हैं। कबड्डी के मैदान को 2 इक्वल हाफ्स में बांटा जाता है। बीच में एक सफेद रंग की लकीर खींची जाती है जिसके दोनों तरफ टीम्स होती हैं। कबड्डी का मैदान मेन एंड जूनियर बॉयज के लिए 13 बाय 10 मीटर्स का होता है। विमेन एंड जूनियर गर्ल्स के लिए 12 बाय 8 मीटर्स का होता है और सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए 11 बाय 8 मीटर्स का होता है। हर मैच 6 अधिकारियों की देखरेख में खेला जाता है। एक रेफरी, एक स्कोरर, 2 असिस्टेंट स्कोरर्स और 2 अंपायर। मैच की अवधि पुरुष खिलाड़ियों के लिए 20 मिनट के 2 हिस्सों में और महिला खिलाड़ियों के लिए 15 मिनट के 2 हिस्सों में बांटी जाती है और आधा समय गुजरने के बाद दोनों टीम्स अपनी जगह की अदला बदली कर लेती हैं। रेड करने की अवधि सिर्फ 30 सेकंड की होती है। अगर रेडर 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लेता है तो वो आउट हो जाता है और ओपोनेंट टीम को एक पॉइंट मिल जाता है। रेड करते वक्त पॉइंट जीतने के लिए रेडर को एक गहरी सांस लेकर अपनी प्रतिद्वंदी टीम के इलाके में दौड़ कर जाना होता है और एक या अधिक खिलाड़ियों को छूकर सांस उखड़ने से पहले अपनी टीम के इलाके में वापस आना होता है। जिस टीम पर रेड हो रही है उस टीम को अपने बचाव के लिए कई दाव खेलने पड़ते हैं, जिससे कि रेडर उनको छू ना सके और ना ही मध्यांतर रेखा के पार अपनी टीम के इलाके में वापस चला जाए। बचाव करने वाली टीम यदि ऐसा करने में सफल रही तो 1 पॉइंट जीत लेगी। ध्यान रहे कि ऐसा करते वक्त रेडर को सिर्फ उसके पैर या धड़ से पकड़ा जाए, बाल, कपड़े आदि से नहीं और ना ही मध्यांतर रेखा को पार करें। पेनल्टीज। रेडर कबड्डी शब्द के अलावा कोई और शब्द का जाप करता है या फिर सेंटर लाइन पार करने के बाद जाप शुरू करता है। एक से अधिक रेडर्स विरोधी टीम के हिस्से में रेड करने पहुंच जाते हैं तो रेड उसी समय कैंसिल हो जाती है और ओपोनेंट टीम को रेड करने का मौका मिलता है। अगर रेडर अपनी चांस आने से पहले ही रेड करने पहुंच जाता है, अगर रेडर की टीम के खिलाड़ी उसको बचाने के लिए चिल्ला कर उसे चेतावनी या सलाह देते हैं, ऐसे हालात में गलती करने वाली टीम को पेनल्टी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से बचाव करने वाली टीम को एक टेक्निकल पॉइंट मिल जाता है। मैच के नियमित समय खत्म होने पर जिस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो विजयी होगी। यदि समय समाप्त होने तक दोनों टीम्स के पास बराबर अंक हुए तो खेल ड्रॉ हो जाता है। फिर 2 बार 5 मिनट का समय और दिया जाएगा। तब भी अगर ड्रॉ रहा तो जिस टीम ने पहले ज्यादा पॉइंट स्कोर किए थे वो टीम जीत जाएगी। क्यों दोस्तों, क्या आप कबड्डी के कबड्डी का कोर्ट 13 बाय 10 मीटर का होता है, जिसको मिड लाइन 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। मिड लाइन के बाद होती है बॉक लाइन, जिसे क्रॉस किए बिना रेड वैलिड नहीं होती। 6 या उससे ज्यादा डिफेंडर कोर्ट पर हो तो रेडर बोनस पॉइंट ले सकता है। कोर्ट के दोनों तरफ पीले रंग का हिस्सा लॉबी कहलाता है। रेडर और डिफेंडर एक दूसरे को टच करते हैं तो लॉबी एक्टिवेट होकर कोर्ट का हिस्सा बन जाती है। कबड्डी की टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। 5 खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। राइट और लेफ्ट कॉर्नर के दोनों खिलाड़ी डिफेंडर होते हैं। इनके साथ खड़े राइट और लेफ्ट इन आमतौर पर मेन रेडर होते हैं। बीच में खड़े 3 खिलाड़ियों में दाहिनी ओर राइट कवर और बाईं ओर लेफ्ट कवर होता है। सेंटर में मौजूद खिलाड़ी आमतौर पर ऑलराउंडर होता है। Nin explains the rules of Kabaddi. Kabaddi is an Indian sport played with 2 teams of 12 players, with 7 players taken to the court at any one time. The game is played on a rectangular court that's generally a maximum of 13 meters by 10 meters
This is a midline that divides the court into two, and these are the balk lines, the end lines, the bonus lines, and this is the lobby area. I'll explain what these are shortly. The object of the game is for your team to score more points than the opposing team. To score, a team must send a player, known as a raider, into the opposing half of the court whilst chanting the word Kabaddi repeatedly. A raider must only use one breath and chant the word Kabaddi repeatedly to show the referee that he is exhaling and not holding his breath. The first goal of the raider is to reach the balk line. Failure to do this results in the raider being out and cannot participate in the next part of the game. The second goal of the raider is to touch as many players as he can and make it back to the midline before he is caught and tackled by the defenders. He can do this in several ways, with a hand touch, a toe touch, a kick, or by trying to escape a tackle and reaching for the midline. He gets 1 point for every opposing defender that he touches so long as he makes it back to the midline or whilst repeatedly chanting the word Kabaddi. And any touched defenders are out and cannot participate in the next round of play. Understand so far? Cool, let's continue. The defenders, sometimes known as antis, will try and stop the raider returning to the midline, especially if one of them has been touched. They can use several tactics such as the ankle hold, back hold, front tackle, and forcing them off the court entirely. If the defenders manage to stop the raider returning to his own half of the court, the raider is out and the defending team gets 1 point. Once a raid is finished, the opposing team must send out a raider of their own within 5 seconds or the team will lose a point. Got it? Good, because it's about to get a lot more complicated. When a player is out, he must wait in the sitting block and is temporarily unable to participate in the game. Once a raider has been tackled or a point has been scored, they are allowed to revive one of their own players out of the sitting block to rejoin the team. This means that every time you score, you can revive one or more of your players back onto the field of play. The game is played in two 20-minute halves for a combined playing time of 40 minutes. Highest score at the end of time wins. Kabaddi is the ultimate game of cat and mouse, as the defenders have to be far enough away so that they can't be touched, but also close enough to tackle the raider should he decide to make a run for it. This is a highly strategic sport, and there's a few more rules that you'll need to understand before playing or watching a game. For example, the lobby. The lobby is an extended area of play, which is denoted by the yellow areas here. These are only active when a defender has been touched, and gives both the raider and defender more room to try and score or get the raider out. Bonus line. As mentioned before, this is the bonus line. If a raider puts 1 foot in the bonus line with 1 foot in the air, he will score 1 point so long as he makes it back to the midline. However, the bonus line is quite far from the midline, and reaching for this line makes it easier for the defender to tackle you. The bonus line is only active when there are 6 or 7 defenders on the court. Super tackle. If there are 3 or less defenders on the defending team and they manage to tackle a raider, this is known as a super tackle and scores 2 points. 1 point for eliminating the raider and a bonus point for doing so with 3 or less defenders. Do or die raid. If a team has 2 unsuccessful raids, i.e. they score 0 both times, the third raid is the do or die raid. Failing to score on the third raid in a row results in the raider being out. Pursuit. A pursuit is where a defender charges at a retreating raider with the aim of scoring a quick point off him. This is usually done if the other team is slow to retreat from a raid and the defender is close enough to score a point and make it back to the midline quickly before the other players realise. All out. If in the rare instance a raider gets all the defenders out in one raid, this is known as an all out. The raiding team gets 1 point per player and an additional 2 points. All players are revived after an all out. To the uninitiated, Kabaddi seems strange, confusing, even ridiculous, but once you understand the rules, it becomes an interesting sport to watch. If you found this video at all helpful, please like, share with your friends, comment, rate and subscribe. It takes me ages to make one of these things, and good karma is always appreciated. If you're also on Reddit, you can post this video and discuss it there, but in the meantime...